फॉर वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, C++ वरना जावा वरना पाइथन। बट ये तो बता दो कि पढ़ना कैसे और कहां से। डू गिव एवरी कॉन्टेस्ट लाइव ऐप विच आई रिकमेंड यू गाइज टू मेक DVT, macular degeneration, varicose veins, carpal tunnel, back and neck problems, social isolation, amazing salary and no girlfriend. If you are okay with this, then well done my boy. I welcome you to the career in programming, an opportunity to land a dream job of more than 1 lakh per month. But the question is how to start as a beginner. It's very simple. Just open your laptop, start hitting the keys, and ultimately you will be the best programmer. No, I'm not kidding. It's very simple, and I think it is one of the best investments I have ever had. Investment as in just $0 or 0 rupees and internal the ultimate amount of money every month. But how to do it? You might be thinking I should be very smart. No, only the hard work, or basically the work hours is required for you to be put in to get the results. Anxiety, depression, self doubt से गुजरना पड़ेगा रिजल्ट पाने के लिए। अब हार्ड वर्क ऐसे भी नहीं करना है कि तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, बैठ के हर चीज कर रहे हो, सारे ट्यूटोरियल, सारे पेड कोर्सेज, सारी वेबसाइट्स, एंड फिर इंटरनेट तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा। हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। मेरी गलती नहीं करनी है जो मैंने करी है। जस्ट डिप्रेशन में चले गए, हार्ड वर्क करे जा रहे हैं, रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। हम करेंगे 20% काम, जहां से मिलेगा हमें 80% आउटपुट। तो सबसे पहला आता है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न इन 2024। अब तुम जानते होंगे आंसर, मैं भी जानता हूं पाइथन, बट मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुम पाइथन पढ़ो। सबका अलग अलग यूज केस होगा कि कौन क्या पढ़ने वाला है। अगर तुम एक नॉन बीटेक स्टूडेंट हो और तुमने C++ पहले नहीं पढ़ रखी अपने सिलेबस के अंदर, या फिर तुम एक BCA स्टूडेंट, या फिर तुम कोई भी और अलग फील्ड के हो, तो आई रिकमेंड कि तुम पाइथन से स्टार्ट करो। चाहे तुम क्लास 11-12 में हो तब भी पाइथन से स्टार्ट करो, बिकॉज लैंग्वेज इज ईजी एंड सिंपल, नो कॉम्प्लेक्स सिंटेक्स लाइक इंग्लिश लैंग्वेज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज versatile and have many applications in it. Like you can use it for web development, data science, automation, and also machine learning. And voila, it is fast to write also. But for the BTech students, or basically who have C++ in their curriculum, I'll highly recommend go with that language as a basic primary starting language. First reason is it will help you in your course, as in the first year you will learn C in the course. Why not learn it pre-ahead? In turn, you will learn C++, which is actually also very highly used in competitive programming field. I'm not saying Leetcode, I'm saying Code Forces, Code Chef, like these fields. C++ is very highly used. Now bhaiya, why is the use of highly used language? See, you will get resources very easily. The code most of people will write will be in C++ only. Again, you can also learn Java because it's used in in your curriculum itself. But at the end of the day, if you learn any language very faithfully, all other languages are more or less same. It's just the difference in STL and the syntax. भैया आपने बता दो कि अगर आप कॉलेज में हो तो पढ़ लो C++, वरना जावा वरना पाइथन। बट ये तो बता दो कि पढ़ना कैसे और कहां से है। सिंपल है, तुम्हें पढ़ना YouTube से ही मिल जाएंगे रिसोर्सेज, और कोर्सेज भी मिल जाएंगे जो तुम कर सकते हो डाउनलोड। तुम्हें पता नहीं है तो टेलीग्राम पर चेक कर लो। अब ये कोर्सेज तुम्हें बिस्तर पे बैठ के नहीं देखने हैं, आराम से नहीं देखने हैं, बिंज वॉच नहीं करना है, साथ में नोट्स बनाने हैं और खुद जो वो बंदा पढ़ा रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी है। यूडीमी और यूट्यूब दोनों पे ही तुम्हें लैंग्वेजेस के अच्छे कोर्स मिल जाएंगे। जस्ट सर्च एंड तुम डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएंगी जहां से तुम कुछ भी पढ़ सकते हो फॉर एनी लैंग्वेज। नाउ लैंग्वेज इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। ये सिर्फ 1 महीने का काम होता है। लर्न एनी लैंग्वेज एंड अल्टीमेटली यू विल बी गुड इन एवरी लैंग्वेज। इट्स जस्ट अ 1 week change and you can get any language done in a 1 week time. अब तुम सोचोगे कि मैं अगला आऊंगा प्रोजेक्ट्स पे। नहीं बाबू, ये उसी ऑर्डर में है जिस ऑर्डर में तुम्हारी इंपॉर्टेंस होती है हर एक चीज की प्रिपरेशन में, टू गेट 1 लाख पर मंथ जॉब इन एनी कॉर्पोरेट। तो अगला आता है अपना प्यारा DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब साफ सी बात है, आई विल नॉट से यू टू स्पेंड मनी ऑन यूडेमी कोर्सेज फॉर इट, सो द ऑल्टरनेटिव इज यूट्यूब। अब तुम्हें अगर पढ़ना है डेटा स्ट्रक्चर्स तो आई रिकमेंड अब्दुल बारी इज दी बेस्ट, और कोई मिले लेटेस्ट तो वो देख लेना। बट एल्गोरिथम्स के लिए आई लाइक टेक यू फॉरवर्ड,
बट सिर्फ DSA डेटा सेलेक्शन एल्गोरिथम करने से ही तुम्हारी जॉब नहीं लग जाएगी। तुम्हें इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऑनलाइन असेसमेंट्स, कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंट्यूशन एंड लिंक बिटवीन ऑफ द प्रॉब्लम, ये सब कुछ करना पड़ेगा, जो आई रिकमेंड आर्यन मित्तल फॉर इट। तो इन 3 YouTube चैनल से तुम्हारा पूरा DSA फ्रॉम स्क्रैच टू कंपनी में घुसवा देंगे ये 3 चैनल्स। एंड प्लीज 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 do Leetcode religiously as soon as you have done your basic DSA. As a compliment, you can do Code Forces and Code Chef, but do Leetcode religiously. Do give every contest live and always solve the daily problem. If you have issues in intuition building, go and come on YouTube and just type the problem name and you will get the solution. But please solve daily. Voila! Now you are ready to apply jobs in any top tech companies. Just make your resume. अगर नहीं आता resume ना, just go and watch the video and apply to these jobs. But before this, if you are liking the video, then the like to the video will be algorithmic. क्या था ये? जो भी था. Now let's come on to the projects. The most hot projects nowadays are either on Python, JavaScript as in web development, or machine learning. So now I'll recommend you the courses or YouTube channels for these specific projects. For Python projects, I love Tech with Tim, Code with Harry and Free Code Camp. They have amazing Python projects. For web development projects, again Code with Harry, Free Code Camp, Chai or Code, Tech with Tim and Florent Pop. Ultimately, for machine learning, there will be a lot of projects in between while learning the machine learning or deep learning itself. You can go and make it. Some of the projects which I built during my preparation was online class to notes converter, which was made using machine learning, and also an Android app for consumers and sellers to connect for the services they need to get or provide. The app which I'll recommend you guys to make are Chat app, Discord bot, Web Scrapper and Chat GPT clone. But make sure you don't binge watch this also and follow along. Please follow along. Write your own code so that you know how and what the code is doing and what to debug and what its implications. But bhaiya, if DS is more than sufficient, then why I should build projects? Firstly, this will get you out of that boredom of doing only DSA for the entire 6 months. Secondly, it will introduce you to the actual software engineer work life, just seeing coding a new stuff and doing the debugging part. And ultimately you will build a beautiful portfolio so as to add in your resume, because resume should not be empty. If you don't know this, watch this video. And ultimately when you have the projects, just host them on GitHub and add the link in your resume. Now with this, you are ready to avail any job from 1 to 1.5 lakh per month in India in any tech company. If you are in depression because of DSA, go watch this video. And if you are confused what to study, DSA, Dev or System Design, go watch this video. I'll see you in the next video. Goodbye. Bye bye.